Okay. Your headphones don't connect. मेरे मेरी शीश करा दिया This is mine. चलो ठीक है मिस रेखा, मेरा भी आ गया। ओके ओके बेटा बाय। ओके very good Hi, good evening, teachers. I see a lot of people joining in. Just allow us another minute or so before we start the session. मन ठीक है ना हाँ आप खुलने नहीं चल रहा है I'll request everyone to please put their mics on mute. Also, please check if you should be able to hear me at this point. Some of you are not joined connected via audio. I'll request everybody to please mute their phones. All right. So we've crossed 100 participants. Let's wait for another minute. Okay, so we are already at 6:34. So welcome everyone. I'm so happy to resume the sessions on foundations, and I'm more happy and obliged that most of you have joined us today. I have already crossed a number of 100 participants, and that says a lot about this
about the commitment towards foundations, and everybody must be looking forward. We just took a short break in between that we could not join, we could not conduct any of the sessions. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. I'm more than happy. It gives me pleasure that all of you are so happy to come back. And I have all my 3 mentors. Since we were doing this after a long time, so I thought I'll have all the 3 mentors come back and again give it a boom start to say that what we are going to now accomplish in this 1 year with foundations. So with that, I would like to introduce my mentors, as everybody can see on screen, or I can see on screen. My first mentor here, Ms. Smriti Agarwal. Hello, Smriti ma'am. Welcome back. Hi, Himani. It's so good to be back. I'm so glad that the foundation started again. And now we can see all our teachers joining in from all over India. Yes, and it's a pleasure to see everybody. Miss Nina ma'am. Nina ma'am, you there? Could we please see you on screen? Hello. Namaskar. Good afternoon. And very soon, good evening. And congratulations to Himani. And welcome. And good to see my co-mentors and also the most beautiful educators from all over. And it's always a privilege to engage with all of you. And though I know it becomes more of a monologue here, but there would be time, I'm sure Himani would give us, when we would also have a lot of learning from you. So it's not that we are sharing something so we know more than you do, but it's just that we've been given a task to share, but we also have to learn a lot from all of you. Thank you very much. Thank you so much, Nina ma'am. And one of my another mentors, Ms. Ruma Purkayastha. Ruma ma'am. Namaste, good evening. I'm very happy to be back and to see all of you. It's nice. We can again think about whatever has changed, whatever continues. And as Nina said, it's a learning process for both of us. I mean, for you and for us. So we look forward to that. And in any way that we can reach out to you, we'd be very happy. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, and welcome to all 3 of you on this session. And this time we've thought that what we'll do is, while our focus still stays NCF foundational stage that has been rolled out, nevertheless, we'll go back to the basics and we'll begin from there. So today we are going to start and talk more about basic child psychology, or understanding a child, or how to do very small basic things in early childhood in a classroom. A lot of talk is done around implementing a lot of things, activity-based learning, play-based learning, this, that, but amidst all of that, some small things which we tend to forget. To begin with, so I'll begin my conversation, I'll begin my discussion at this point. And to begin with, I would like Dr. Nina to let us know and to make us aware of the fact that what are the basic things that are there that needs to be covered in child development at an early age, at an early stage, when we say foundational years. So what are, ma'am, those basic things, or those basic child development milestones, or factors that teachers need to keep in mind that this much must be achieved? Thank you, Himani. So I will try to be very brief, yet try and cover the most of it. Yeah. Now, when we talk of the early years and we talk of the development of children, usually the development in this phase in the early years starts from 0 years and goes up to 6 years. Right. So each phase is divided into from a baby to an infant, toddler, and a preschooler, like that. And each stage and each phase is very, very specific, because when we talk of development, there's some 2 different concepts that we talk of: growth and development. Right. So I'm not going to get into the detailing of it, but here we are talking more of development, which is more of qualitative shifts that we see in a child, not in terms of their height and weight and other parameters of growth, which is related to nutrition, which is equally important. But here we're talking of the developmental domain. So when we talk of development, there are a couple of things we need to keep in mind and understand and be very, very mindful of. That Nina ma'am, just a minute. I request you to unmute yourself now.
No, Neena ma'am, you're still on mute. Sorry. Yes. So when we talk of development, there are a couple of things that we need to really keep in mind. So one is that there are different domains, like is everyone okay if I use only English, or you want me to use a mix of Hindi and English? Can we do a mix? I have teachers from across. Yeah. Okay, fine. So जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट सबसे पहले देखते हैं कि हर बच्चे में डेवलपमेंट की पेस थोड़ी विभिन्न होती है, राइट? So all children don't develop in the same at the same pace and in the same way. So there are certain factors which contribute to. तो कुछ चीजें हैं, कुछ उनका वातावरण है, उनके जेनेटिक्स हैं, वो किस परिवार में पैदा हुए, उनको किस तरह का एक्सपीरियंसेस या अनुभव मिला बचपन में. इट इज नॉट ऑल अबाउट कि वो किस स्कूल में गए, वो स्कूल भी एक उनको लर्निंग एनवायरनमेंट दे रहा है. तो वो किस तरह के परिवार में है, वहाँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं है, वहाँ पे हार्मनी है, पीस है, वो किस माहौल में बच्चे हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं उन पर निर्भर करता है बच्चे का डेवलपमेंट. सेकेंडली जैसे मैंने कहा कि हर बच्चे का डेवलपमेंट का पेस अलग होता है, विच अगेन डिपेंड एंड इट इज वेरी एज अप्रोप्रिएट. तो अगर हम एक 3 साल के बच्चे से अपेक्षा करेंगे कि वो 5 साल के बच्चे का काम करे, तो वो गलत अपेक्षा होगी. मैंने देखा है बहुत स्कूलों में 3 साल में बच्चों को पेंसिल दे दिया जाता है लिखने के लिए. मैं क्यों इस बात को बार बार दोहराती हूँ हर फोरम पे, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि मेरा बच्चा जल्दी से A to Z लिखने लगेगा, 1 से 20 की गिनती लिखने लगेगा, तो वो बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से आगे है. बट आई एम वेरी सॉरी टू से वो बहुत गलत तरीका है हमारा डेवलपमेंट को देखने का. तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट हम नॉर्मली 4 क्षेत्रों में देखते हैं. तो देयर आर 4 डोमेन्स. सो फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट. तो पहला चित्र, तो हम ज्यादातर टीचर्स हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी मोड में चले जाते हैं कि हमें कोई एक्टिविटी गूगल पे बहुत पसंद आई या हमको लगा, और फोकस हमारा रहता है कि हमें नंबर वर्क कराना है, हमें अल्फाबेट कराने हैं और हमें कोई कहानी सुनानी है. तो हम ये 5-6-4 चीजों में ही उलझ के रह जाते हैं. So it is very important that जो भी हम करिकुलम बनाएं बच्चों के लिए, वो करिकुलम होलसम होना चाहिए, वो होलिस्टिक होना चाहिए. तो जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं तो होलिस्टिक मीन्स इट कवर्स ऑल द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इज एज अप्रोप्रिएट. तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इज द फिजिकल डोमेन एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता होगा या आप कर रहे होंगे, बट हम उसको जैसे हिमानी ने कहा, वी आर काइंड ऑफ रीविजिटिंग एंड इंश्योरिंग कि हम उन बेसिक चीजों को मिस ना कर दें अपनी प्लानिंग में. तो होलिस्टिक की हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट में 2 भाग होते हैं. ग्रॉस मोटर स्किल, जो कि हम जब बड़ी मसल्स की बात करते हैं, हैंड, आर्म्स, लेग्स की बात करते हैं, बैक की बात करते हैं, जिसमें हम जंपिंग, रनिंग, हॉपिंग, बैलेंसिंग बॉडी, ये सब. एंड ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व्ड in which promote these gross motor skills are physical domain activity. Then under physical developmental domain, we also have fine motor skill. So fine motor skill is basically your fingers, hand movement, your wrist movement, and eye and hand coordination. So anything that promotes this will support the fine motor skill development. So these are the physical part of the bodily part. The second aspect is your cognitive डेवलपमेंट, जिसको हम मानसिक विकास बोलते हैं, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, जहां हमारा सारा जो भी हम अपना नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, वेदर इट इज न्यूमरेसी, लिटरेसी, वेदर इट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो भी हम उनको स्टोरीज पढ़ा रहे हैं, उनको मैचिंग करा रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर मैं बात करें तो मोटा चीजें तौर पे है कि बच्चे उसमें पब्लिक स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज गेनिंग, and their thinking comes under the cognitive development. And things like when we do recognition, so चाहे हम alphabet की recognition करें, fruits, vegetables की करें, उनका identification करें, उनकी colors करें, so all these aspects that come part of the cognitive development. Then we look at the matching, we look at categorization, we look at sorting. We give children a
small problem. For example, we tell them अगर धूप बहुत निकला है तो हम क्या करेंगे, बारिश आया तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने जूता नहीं पहना तो क्या होगा, बहुत गर्मी है. So where are we trying to do? We are trying to from very simple problem to little complex problem. So we are here. I'm not talking of problems only in the realm of कि we are talking of कि उसने maths का problem solve किया. We are talking of general problem that a child faces even in their day-to-day living, the real life experiences. So all the problem solving skills, all their thinking skills, all their knowledge gaining is part of their cognitive development. Then we move to the social and emotional development. When we talk of the, just give me a second, I think my phone is. So teachers, basically, I think what we are, yes, okay, ma'am is back. So the third aspect is the social emotional development that we talk of. Now, अगर हम social emotional जैसा कि जो शब्द है हमने social और emotional की बात किया, तो social is anything where because we are all social animals, right? तो हम कोई भी बच्चा अकेला रहना पसंद नहीं करता है. And आजकल जब परिवारों में बहुत छोटे परिवार हैं, बहुत परिवारों में एक बच्चा है, तो उसका social development का जो main responsibility है वो institutional responsibility बन जाता है, right? So how do we, and we are not looking at, of course the child has learned to form relationships and bonds with their families, but we go beyond the family when the child enters a school. So उसके relationships कैसे बन रहे हैं, वो teacher से कैसे bond होता है, वो basic चीजें like respect, appreciation, gratitude, उसका अपने इमोशंस की अवेयरनेस क्या है, उसकी इमोशनल उसको हैंडल कैसे करता है बच्चा, वो रेगुलेट कैसे कर सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर बिकम पार्ट ऑफ योर सोशल इमोशनल. सो वेयर वी लर्न टू डेवलप फ्रेंडशिप्स, वी लर्न टू negotiate situations, we learn to negotiate in our relationship, navigate our relationships, do a group play. Not just an individual, so it could be a small group of 2 or 3, it could be a larger group of 8 or 10. So all these skills children develop as part of the social emotional development. And then we finally look at the language development. And we also look at the creative bent of children. So under language, we know कि बच्चा जब बोलना लैंग्वेज सीखता है तो कैसे सीखता है, वो पहले सुन के सीखता है, तो बोलना नहीं शुरू करता है, वो सुनता है, वो ऑब्जर्व करता है, तो ऐसा उसका नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है लैंग्वेज के थ्रू. ये अगर वो मदर को देखता है, बहुत स्माइलिंग मदर है, एंग्री मदर है, तो उसका उसी तरह से उसका लैंग्वेज बिल्ड होना शुरू हो जाता है बचपन से. But since we are talking here to the educators and we are talking of age group from 3 onwards, so the child has already come with some kind of a base language. Now, many a time we experience कि उसके base language में क्या vocabulary है, वो positive vocabulary है, वो negative vocabulary है, because children are already speaking, they're already expressing, and how well they can express, how well they can communicate, and then we start with their. So their basic vocabulary is already in place, their communication skills are already in place when they enter the school. How well they are able to express themselves is something that we need to. And I remember we had last year also done a workshop on conversation skills, you know, how important they are as part of the language development. But again, later on, then we move on to the literacy skills where children learn to recognize, where they begin to read, they begin to write. So all that also becomes, and here stories, our conversations are so, a role modeling, how we role model as a teacher, it becomes very important. जैसा language हम use करेंगे, अब मैं भाषा की बात नहीं कर रही हूँ कि अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, but जो शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे, वही शब्द बच्चे अपने language में build करते हैं. So we have to be extremely mindful as teachers that what kind of language we use, so that our children are also, because they are totally aping the teachers, they're totally aping their वो अपने family members को. तो बहुत बार हमें महसूस होता है कि बच्चे गलत लैंग्वेज लेके स्कूल में आ रहे हैं, तो all teachers do is they run to lodge a complaint, they call the parents and reprimand them. It is very important to in fact counsel the parent. They even don't know, they don't understand, while they are using it, they are shouting at their parents not to do the same, right? So this is the role of the advocacy role of the teachers.
And so with these developmental domains, we have to also say कि आज अगर आपके पास 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो सब बच्चे एक पेस में नहीं चलने वाले हैं. So when we do progressive curriculum, we look at कि 3 to 4 में that's called age appropriate. And her developmental domain को assess करने के लिए we have milestones in. So I'm not going to go into the detail, but there are milestones कि इस उम्र का बच्चा सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसको इस एज में आना चाहिए. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करें तो उस बच्चे को क्या क्या आना चाहिए. तो बहुत बार हमने देखा कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन में ही फंस के रह जाते हैं और बाकी डोमेन्स जो हैं वो निग्लेक्ट और इग्नोर हो जाते हैं. So anything that you do, and I'll quickly close it. Let's take the example of apple. ठीक है, एप्पल सबसे बच्चे पहले लाल कलर, रेड कलर इज एप्पल, जबकि रेड कलर इज नॉट एप्पल. बट एनीवे, सो आई एम जस्ट लुकिंग एट, मे बी रेड बॉल. तो हमने एक एक्टिविटी कराई, whatever activity we may do. I'm taking an example of an apple. So all I'm just trying to say is that we can cover every domain using apple. We can talk of social domain or emotional thing as to whether I love to eat apple, how I relish an apple, how can we divide one apple amongst 10 children or 12 children or even 20 children. So that is something as part of the social development in terms of sharing. We can talk of cognitive in terms of color, in terms of the taste of the apple, where does an apple grow, what is the shape of an apple, and then other aspects, the hard and soft, so many concepts we can do. And when it comes to language, we could build a nice story or a rhyme around apple. We can have a race around an apple. We can do fine motor skills when we do coloring of an apple, or we do a craft around an apple. So all I'm trying to say is जब भी आप कोई भी एक विषय लेते हो, कोई भी एक activity लेते हो, all you have to be mindful is क्या हम उसमें सभी domains को cover कर रहे हैं कि. और अगर कोई बच्चा हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, तो कभी कभी वो कोई पर्टिकुलर डोमेन्स में आगे होता है और किसी डोमेन में वो पीछे होगा, depending on their learning style. So it is all okay. So we have to focus. So unless and until we know a child, we will not know कि हमें उसके किस डोमेन का उसका एसोसिएशन उसके लर्निंग स्टाइल से है, तो उसको उसी हिसाब से हमको देखना है. What we call is play based or an individual child centric learning. So thank you very much. I'll come back if you have anything around that. Himani, I hope I haven't Thank taken you much so time. much. Thank you so much, ma'am. But just to sum it all up, so we say we have a physical domain, we have a cognitive, we have social emotional domain, and We have language. language domain. 4 domains. So teachers, just to sum it up once again, physical domain, social emotional learning, cognitive domain, and we have the language domain. So these are the 4 domains that we are talking. And like ma'am said, I second ma'am, and I'll give you an example, small example of myself, that if I am also learning, I'm not very good at coloring. So if you tell me that color something, I don't get it. You know, I'll probably bring in coloring an apple and I'll end up making it an orange or looking like a mango. So I just don't get it. Yes, if you'll give me a rhyme around apple, I'll always remember it. A story of apple with an apple, I'll always remember it. And one quick update I'll give you, I'll share it in the group also. Just a few days back, I came across an NCERT link. They have developed an e-portal, which is a WhatsApp link, wherein you can get a lot of help. So you just, it's an AI based tool, I guess. You just have to say that I need a story, and it'll ask you, for what? You say around an apple. I've tried it. And it'll give you a nice story around an apple, which you can use in your classroom. It's a very good tool. I'll share the link and everything in the WhatsApp group also, in the foundations. I found it really helpful for this age. And like ma'am said, you'll get a lot of help, you know, for all these domains also. I understand developing a story on the spot, developing a rhyme on the spot becomes a challenge, right? So you'll get help here. So yes, I will share, Sonali ma'am, for sure. It was very nice. And the first thought that came to my mind was share it in foundations. I'll share it with all of you. You love it. Thank you so much, Nina ma'am. Taking on from where you left, I would like to take my next question to Ruma ma'am. And I would like to understand that, ma'am, now that we have talked about different domains and different areas where the child needs development, how can we develop, you know, one very important thing is life skills.
Life skills is something wherein we don't have a curriculum. We don't have any kind of a structure learning material around it. And I personally, I'm sorry, educators, if I don't want to hurt anyone, but I feel for all of us, life skills, the important life skill is different. Like for me, probably honesty would be the most important life skill, maybe. And for you, it will be very different. So the focus that is put on a life skill is very varied. It's not standard. So how can we make sure that at this early age, we can develop life skills in students? Thank you, Imani. Very, very relevant today. Before I go on, I want to just take on with what Neena just said. We need to understand that there are different kinds of learners in our classroom. And like you said, that you may respond to a story and not to drawing. Yeah. That is what we need to, and that's where, you know, the focus of a life skill comes in. I think it's at this stage, it is better to call them essential skills. Of course, CBSE and NCERT have given us a huge list of 10 life skills, which, you know, gets incorporated. But I feel somewhere in the foundation years, we tend to overlook it because, as you said, there's no curriculum for it. There's no curriculum. What is important is we need to identify that these are essential skills, break it down to what is relevant to our little children, and weave it in our curriculum. Neena gave a beautiful example of an apple that can be used in various ways. Those life skills go into that same activity. So that's how we need to do it. Now, if I may just request, you know, Avantika to just share, I made a requested for a slide that I just wanted to highlight what are the life skills. They're essential skills. Narrowing it down from what CBSE tells us, we are looking at 10 basic things in the foundation years. Can we just quickly see that and then I'll continue? Can we just, we're looking at communication, how children communicate. And here we are also looking at verbal and non-verbal skills. It's not just one, what I'm speaking, it's how I am communicating. Because these are the essential skills that form the basis, the foundation, the building blocks on which everything else later on in life adds on to. Self-care, am I able to look after myself? Basic activities that we do in our classrooms. Parents on board so that they're doing the same thing at home. Being able to manage their emotions, that's also a part of self-care and communication. I have to be able to understand what I'm feeling, give my emotion a label. Problem solving. Now, problem solving may sound like a big word, but we're doing it in our classrooms all the time. Just basic things that they're doing, to be able to make a choice, to be able to say a yes or a no, to do something and say, no, this is not right. Maybe I need to do something different. So, and that is going to happen when we give them open-ended tasks in our classrooms, where we also accept answers that are not in our textbooks. Allow for creativity in the child, as long as the child is within your parameters, of course. But allow for this. Social skills, social emotional development is one of our domains. Now, social skills, how we interact, how we talk, etc., etc. What is important here is to teach the child how to pick up the cues, how to be able to see that, okay, this one's not talking. Can I go up to him and talk? She's sitting quietly in the class. Maybe I can go and talk to her. Those little cues is what we need to make our children aware of. We don't do these things in general. But these are all things that can be woven into whatever I'm doing in the classroom. It doesn't require a separate class. It doesn't require a separate activity period. It's all a part of it. So these cues, if they pick up, now the moment you tell them, you sort of teach them or you guide them to look at cues, their sense of observation is going to become better. When their observation becomes better, they are going to be able to see patterns. They're able to see a lot of things which we as adults miss because no one taught us the observation skill. No one taught me the observation skill 60 years ago. Children today, we need to teach them these things. Their perspective will change. Their perceptions will change, which is the need of the hour. Emotional regulation is another life skill that they need to learn.
And I think as adults, we first need to learn to regulate our own emotions too. To be able to identify the emotion, to be able to figure it out, to learn the appropriate way of expressing an emotion. Emotions have to be expressed. They can't always be bottled up. But we have to learn appropriate ways of expressing them. And at this stage, we have to understand these children have not learned the appropriate way of. So if whichever way they express, it's our work, it's our job, it's our privilege to teach children how to do it properly. Creativity and imagination, little children can be so imaginative. And I'm going to reiterate what I say very often, I think virtually all workshops. Children are very imaginative. They are not necessarily lying. You know, our first reaction is, झूठ बोल रहा है. Give it a minute. थोड़ा सा रुक जाइए, बात करिए बच्चे से. हो सकता है अपने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली हो. It's not necessarily lying because at least the little ones are too small. Of course, as they become 7, 8, 9, that realization steps in. And then they learn which buttons to push. But younger than that, because they're very imaginative, they can think, they can even imagine a sky which is green, maybe purple. They'll think of an apple which is black. That's their creativity. They have not learned the age appropriate or the social norms. They're going through it. So allow them that time to be creative, to be imaginative. Physical coordination, physical domain, Nina mentioned about that. Allow them to learn balance. And they will learn balance when they do activities. There are many children who will walk in a class, push at all desks, fall down, and we turn around and say, oh my God, this child is so clumsy. Not necessary. Let's teach the child to navigate properly. Fine motor skills, of course, with all the work that we do. Avantika, we can close this. So I wanted to highlight that these are the life skills, essential skills that we look at in the early childhood. Now, you know, going from here, I feel what is important here is to allow children to learn how to learn. That is important. Now, how do they learn how to learn? It's something, you know, these things have got very big words nowadays. They've got metacognition, there's that, all kinds of things. But basically, when we talk about learning how to learn, is to allow them to observe, allow them to be curious. Only then are they going to learn. Allow them to think. Don't be in a hurry. 30 minutes, this worksheet has to be finished. I agree that you are on a thing and everything has to be finished. Design your work in such a way that you allow for a little creative time, a little discussion, a discussion on the worksheet. I've seen very often worksheets are just given out and children are told, okay, now the first one is done for you, do the rest. That's not the way you are going to encourage creativity. And of course, another thing which I always talk about, try and inculcate a love for books. They may not read at that stage, but they'll handle books. And it doesn't matter if books get soiled. Books used will never look untouched. Books have to be touched. Books have to be, pages have to be shifted. Allow for the love for reading. Because if you do this, there will be a joy for learning. And if there is joy for learning, all your hands-on experiences, your activity sheets, your indoor play, your outdoor play, and all those things that you do in your classroom, I won't go into details, they are going to become easier. They're going to become better. You will have more fun when you are collaborating with them. We make them do, now these skills can also be learned when you do gardening, help them to make lists, various lists. In a school, I found that one class was making a grocery list. Very common. One teacher was making the children make a list of things that are used in a classroom. Supposing you had to set up a new classroom, what are the things that you would use? Children went around observing, okay, we have this in our class, we have this in our class, we have this in our class. So these are all ways in which time management, in whatever way, routines, schedules, they have to learn to control themselves, self-control. Why is it that we have break time? You'll have your breakfast at this particular time. It's not that we're depriving them of food. It's because they need to control, self-control. They need to learn self-control. That, okay, if I'm hungry at 8 o'clock in the morning, I'm going to open my tiffin box and eat. It doesn't work like that.
So they have to learn self-control. So these are all the activities that you do, which is part of life skills. And please, if we incorporate them into our curriculum. Now, by incorporating them, what I'm trying to say is that if you are a little aware when you do your lesson planning, when you plan your objectives of the lesson, etc., that you do, if you make a mention of it there, that, okay, in this activity, this is what I'm looking at. I'm going to focus on observation. I'm going to focus on time management, whatever it is that you choose. I'm going to focus on communication, non-verbal or verbal, etc., you will be more conscious of the fact that you need to do it in your class. Because after all, we're human and we have so much to do, and your work is cut out for you. You have a lot on your plate. So if you make a mention of it, you will not overlook it. So I think essential skills are very important. And let's make an effort to do this. I would like to just end with one little example. You know, we tell our children, go wash your hands. And we presume that children know how to wash their hands. Why not break down this activity? Why not tell them that, okay, you walk up to the basin, take one pump of soap, open the tap, rub your hands together till the soap is off, close the tap, use one tissue. Where will you throw the tissue? Etc., you know, whichever way, depending on what applies to you. It's a very basic essential skill that everybody needs to learn. So any such skill, break it down into smaller bits. It becomes more doable for the children. It is a learning experience. And at the end of it, it's going to go faster. So my only request, and I reach out to all of you to tell you that, you know, incorporate these in your classrooms. Foundational literacy and numeracy is a life skill that has been brought in. Let's not look at it as acha bhi number work karana hai, abhi language karana hai. It's a life skill. Why are we doing that? We need to teach our children how to count money. Not necessarily make them CAs at this point, but they need to learn to count money. They need to have number sense. Otherwise, how are they going to go to a shop later and do anything? So it's a life skill. So, okay, I can go on. I close here. They're essential skills. Incorporate them into your classroom, into your activities, and it's not difficult to do. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And I completely agree that these are essential skills. And one thing that I completely second, and a lot of teachers, you know, not intentionally, but we tend to skip it very by chances, that when we talk of communication, we keep focusing on that every child stage पे जाके बोले, हर बच्चा स्टेज पे जाके बोले, हर बच्चा स्टेज, पेरेंट्स का भी यही फोकस होता है. आजकल के टाइम में ना एक बहुत छोटी सी चीज हम भूल गए हैं, बॉडी लैंग्वेज. Children have the weirdest body language. And, you know, like Neena ma'am also mentioned, they learn from their families, or, you know, some children are just naturally good, but some children have that smirk all the time. I visit my... I'd like to interrupt you here and just say one thing, that as we cannot control what's happening in the houses, we can only bring parents on board and explain to them, but we can't do beyond that. So I think for anything to be learned well, the teacher has to be a role model. Yes. So let us try in our classrooms to be what we want our children to. And one more thing is that when we say that teachers are role models, where we say that parents ka bahut influence hota hai, there is also a fact of the situation that a lot of children go home and say, Mummy, aap meri ma'am ki tarah tyaar nahi hoti ho. See that influence, and specifically at this age. At this age, मम्मा जैसे मेरी मैम ने साड़ी पहनी थी, आप ऐसे साड़ी नहीं पहनते हो, आपके बाल ऐसे क्यों नहीं है? So teachers at this age, trust me, you are Miss World and Miss Universe for those tiny tots. Whatever you do, they look up to you like goddesses and gods. Yes. For them, you are the best. मम्मा भी गलत हो सकती है, पर मैम गलत नहीं हो सकती. गलत होती है. So when we say you are role models, you actually are. Take that Sushmita Sen feeling and enjoy it. Yeah, it's a privilege. Actually, it's a privilege with a responsibility. Yes, and you know, it is only for these years. अगर आप एक बच्चे को यहाँ पे छू देते हो, वो बच्चा गाल नहीं धोता कि मैम ने यहाँ टच किया था, मैम ने यहाँ स्टार दिया है, तो ये हैंड वॉश नहीं करना है मैंने, मैम ने यहाँ स्टार दिया है. So you understand the kind of influence you have. So all these chota things that we are discussing today, they actually build that personality of the child. I don't remember any of my great teachers. I remember my kindergarten teacher Mrs. Kakkad. The influence she had on me is what I am today.
I don't remember any other teacher probably that much as I cherish remembering Mrs. Kakkar. So with that, I'm going to move on to, thank you so much, Ruma ma'am. I'll move on to my next question to Smriti ma'am. Smriti ma'am, you're there? Yes, Himani, I'm very much there. Ma'am is here. Smriti ma'am, I have a very interesting question for you. So my question to you is that there's a very fine line and teachers struggle with this in the classroom, especially when I understand they have 40 tiny faces and feet and hands moving around and to discipline them. So one Okay. thing is keep quiet. Don't move, don't talk, pin drop silence, which we've all heard in our classrooms. Right. But then there's another thing where we say there is behavior management. So discipline versus behavior management. What is better? How do I do it? How do I do I have to do both? Or can one do I don't know. There's a big commotion and a chaos even in my head for these two terms. Okay. Thank you so much, Himani, for the question, and not an easy question at all. Yeah. So Yes. I have a very easy thing for you. It's not there. So first and foremost, everybody, happy Friendship Day to you. Oh, ma'am has all the friendship bands. Oh yeah, we celebrated today. So, and I'm lucky to have many friends. So I feel privileged about it. So happy Friendship Day to all of you who are here. And please, tomorrow is the day basically. So wish all of them from my side. And the question that Himani has asked me, the very simple thing is, when you're friends with your children, you don't need to discipline or behavior manage them. You can, if you're friends with them, if you understand them, if you treat them as a friend, if you respect them as people, there is very little scope that you will find disciplining a challenge. The only problem happens is when we feel that we have the power over them and they do not know the rights and the wrongs and we know it, that is where the problem arises. So I'll just share my screen and I'll take you through some things which might help you. I can't be sure, but let's see. Okay. Good to go, Himani? Yes, ma'am. All right. Meanwhile, I hope teachers, everybody's enjoying the return session of foundations. A quick thumbs up and yes, no, maybe in the chat box. It's been pin drop silence. So when we say discipline, yes, I've got one yes. Just one yes. Okay. Yeah, if reactions are not coming in, we get bored, Baba. Like Nina had started with this thing that it starts to be interactive. This is like a one-way communication, fun. but here also you Amazing. can react. My yeses are going through the sky. I am so Okay. happy. Thank you so much. Super. Okay, and you please continue with reactions because otherwise I'll stop midway. धमकी, हाँ? बिल्कुल threat है. ऐसा नहीं सोचने का, हाँ? चलो. Discipline versus behavior management. First and foremost, there are two sides of a brain. If you people know it, good. If you don't know it, then we know it. If you know it, it's a refresher. So there are two sides of a brain, left brain and right brain. For children, when you have to manage them, you have to be in the classroom and it's the classroom management system. Just make sure that you're engaging both the sides of the brain. One is creativity, one is logic. One is music, one is words. So when you're doing rhymes, then that's the best way to discipline them. Mind it, very simple, very small. I don't know how, all the teachers here, you can give me your responses in the chat box or you can give me a thumbs up also. I'll not be able to see it. Himani will see and tell me. If you are singing a rhyme in whatever nurseries, junior KG, senior KG, play school, whatever classes you are in, if you sing a rhyme where the children already know or they like, that time, do you have to discipline them? Yes, no. One no. Mixes, no and yeses. No, Okay. Majority no's. Knows because you're the ones who are saying yeses because most probably they get very excited. So probably that is why you're feeling. So first two things that Himani said, please don't do it in your class. Don't say keep quiet. Don't say sit down. What if anybody tells you, sit down here, be quiet and don't talk, don't move and just listen to one person for 3 hours. Will you be able to do that? Nobody can do that. You're expecting that from a 3-year-old?
At that time, their kinesthetic energy is at the peak. Their sensory perceptions are at a peak. They want to touch everything. They want to hold everything. They want to taste everything. They want to walk all around. They want to explore the spaces. अगर हमें सब जगह घूमना है, हमें सब चीजें छूनी है, हमें सब चीजें मुंह में लेके देखनी है, उस टाइम पे अगर मुझे कोई बोलेगा एकदम चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, सुनो मेरी बात, डोंट मूव, हिलना नहीं, अरे कैसे नहीं हिलना, सारे सेंसेस हैं फिंगर्स में, टोज में, सब जगह, क्या करूं, व्हाट टू डू? Nobody can keep them still. You have to keep them engaged. अगर पूरा इंटरेस्ट आपकी तरफ है तो प्रॉब्लम ही सॉर्टेड है. बट क्या होता है, हम टीचर्स जो होते हैं ना बड़े बोरिंग हो जाते हैं, हम लेक्चर देने लगते हैं, हम पढ़ाने लगते हैं. जब से आप पढ़ाना शुरू करोगे वो कुछ और सोचना शुरू करेगा. सो कीप देम इंटरेस्टेड. एंड सबसे ईजिएस्ट वे, जैसे मैंने बोला, राइम्स होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो. ये आवाज आ रही है? Yes. वेरी गुड. इससे डे शुरू करो. आप लोग भी गा सकते हो. अनम्यूट करके मत गाना, हिमानी मारेगी. अपने अपनी जगह पे गाओ जहाँ हो. समय पर उठ जाना, सही समय पर उठ जाना, सही समय पर उठ जाना. ओके. सो चिड़ियों से फूलों से मुस्काना सीखें, चिड़ियों से हम गाना सीखें, और सूरज दादा से सीखें टाइम से उठ जाना. लाइक दिस ऑल द रूल्स कैन बी टॉट. एक बार रूल समझ में आ जाते हैं, लाइफ इजी हो जाती है. अभी आप सोचो, सपोज करो एक आदमी है वो चोरी करता है, उसको पता ही नहीं कि चोरी करना बुरी बात है. अ थीफ डज नॉट नो दैट इट्स रॉन्ग टू स्टील, तो कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि गलत है. द मोमेंट आप उसको ये बताओगे कि ये गलत है, इसमें इसके पीछे एक लॉ है, इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि आपको जेल जाना पड़े, आपको ये करना पड़े, तब शायद वो ना करे. द पॉइंट इज दैट अगर आपको बच्चों का बिहेवियर मैनेज करना है, उनको डिसिप्लिन रखना है, वॉट एवर इट इज, दे हैव टू नो द रूल्स, दे हैव टू नो what is the expected behavior and उसका consequences क्या होगा. परिणाम भी होता है एक. अगर किसी बच्चे को काटोगे तो उसको दर्द होगी, वो रोएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, consequences है. किसी को मारना नहीं है, क्लास में जोर से भागना नहीं है. क्यों नहीं भागना है? Why you should not run in the class? जगह नहीं है. जब टीचर will take you outside to play, then भागना. You have to tell them these things. So it's very very important कि पहले आप ये समझिए कि बिहेवियर क्या होता है. ये रहा बिहेवियर का डिक्शनरी डेफिनेशन. ये एक एनिमल या पर्सन, कोई भी किस तरीके का रिस्पॉन्ड करता है टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन या एक स्टिमुलस. तो मुझे किसी ने कुछ कहा या मुझे कुछ फील हुआ या मैं एक सिचुएशन में हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हूँ, कैसे मैं बिहेव करते हूँ, मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है, दैट इज माई बिहेवियर. दैट कैन बी रूड, दैट कैन बी एंग्री, दैट कैन बी एनीथिंग. And that can be calm, and that can be very logical, and that can be very sensible. So depend करता है. So that is a behavior. And discipline क्या होता है पता है? Definition पहले देखो. To train somebody to obey rules or a code. और उसके बाद उसको बताओ कि there is using, and that कैसे आप उसको बता रहे हो? You are using punishment to correct disobedience. Disobedience मतलब बात नहीं माना तो पनिशमेंट मिलेगी. अब पनिशमेंट से इम्प्रूव होगा? आपको क्या लगता है? You have to answer me. Do you think punishing a child will improve a child? उसका behavior improve होगा? You can improve a child by punishing a child? Yes, no, whatever comes to your mind. Come on. Teachers, I see, ma'am, a lot of no's, but I feel one thing that teachers, why still we tend to punish the child is that हमें लगता है कि बच्चा डर गया है. तो my question, another question here is कि क्या हम बच्चे के मन में वो डर बिठाना चाहते हैं? चाहते हैं, हाँ, हम पनिश करना चाहते हैं. राखी मैम ने कहा है he will rebel, he or she will rebel. कुछ रेबल होते हैं, बाकियों में ना डर बैठ जाता है. हाँ. कि अगर मैंने कुछ किया तो पता नहीं क्या होगा. एंड वो डर, ट्रस्ट मी, इट स्टेज लाइफ लॉन्ग. थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ ऑल्सो. मैं आप अपना ही नहीं, आप अपने एक्सपीरियंसेस देखिए. बहुत सारी टीचर्स मेरे साथ ये एग्री करेंगे कि हमें कुछ भी नया डिफरेंट करते हुए डर बैठ गया है. यार अगर सही ना हुआ तो, अगर ये ऐसा हुआ तो, एंड ये डर तभी बैठा है.
Yes, Himani is absolutely right. So many times we do know the answer, we don't answer. So many times we need to do something, we don't do it We don't because do एक डर बैठा हुआ है. ये डर कहाँ से बैठ गया? ये डर शायद punishment की वजह से बैठ गया है. discipline की time ही Early बैठ in life, right? that तो you will एक only obey your elders. Obey करना है, अपना सोचना या करना नहीं है. नहीं, आपको सिर्फ फॉलो करना सिखाया जाता है. आपको कभी भी अपने डिसीजंस लेने नहीं सिखाए जा रहे. अगर यू आर नॉट टेकिंग योर ओन डिसीजंस और आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो तो आप गलत सही सब फॉलो कर रहे हो Support. बिना कुछ सोचे समझे. इज दैट करेक्ट और नॉट? आप खुद को सोचना है. ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू. And that happens with discipline. दैट हैपेंस विद डिसिप्लिन. बट बिहेवियर मैनेजमेंट क्या होता है, चलो वो जल्दी से समझ लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी हाउ. अब्राहम मैस्लो, नाम सुना है किसी ने? हाँ ना, थम्स अप, एनीबडी? एनीबडी मतलब रूमा मैम और नीना मैम नहीं, हाँ, या हिमानी नहीं, ये लोगों को पता है. A few yeses, a few no's, mix and match. Mix and match, okay. Abraham Maslow was the early childhood philosopher who had given us a pyramid for self-actualization. वो ये है. सबसे पहले टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बिहेवियर है या ये जो कंडक्ट है या ये जो डिसोबीडियंस है ये कहाँ से आ रहा है. क्या हमने पिरामिड के नीचे जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि बच्चा वहाँ पे सेटिस्फाइड है. दैट इज़ द फर्स्ट नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल नीड्स. फिजिकल नीड्स मतलब शारीरिक ज़रूरतें, खाना पीना, सोना, आराम रहना, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल रहना, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. तो इज़ दैट ऑल टेकन केयर ऑफ? इज़ द चाइल्ड हंग्री, थर्स्टी, नॉट स्लेप्ट वेल? ये सारी चीज़ें हैं. अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो बिहेवियर नहीं होगा, बिकॉज द चाइल्ड हैज़ टू एक्सप्रेस देयर डिस्कम्फर्ट. मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं रात में नहीं सोया ठीक से, मम्मी ने सुबह सुबह उठ के स्कूल में को ऐसे ही छोड़ दिया है, मैंने शायद अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पॉटी नहीं करी सुबह, लेकिन अभी स्कूल आ गया हूँ. क्या होगा मेरा बिहेवियर? आई एम इरिटेटेड, आई एम अपसेट, आई एम डिस्ग्रंटेड विथ थिंग्स. उसके बाद आप मेरे को बोल रहे हो कि चुपचाप बैठ जाओ जगह पे. कैसे होगा? नॉट पॉसिबल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि वो पेरेंट्स से भी ये बात करें कि व्हाट काइंड and what time the child is sleeping, having breakfast, not having breakfast, how is the child coming to school, is the child ready to learn. आप सीखने के लिए तैयार हो, आपने खा पी लिया है, आप ठीक हो, आपका ब्रेन वर्किंग है, राइट नाउ यू आर फीलिंग फाइन, शारीरिक तरीके से आप तंदुरुस्त हो, तब ठीक है. बीमार बच्चा क्या सीखेगा? हंग्री बच्चा क्या सीखेगा? वो एक्सप्रेस करेगा अलग अलग तरीके से. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स. सेकेंड थिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी. इज द चाइल्ड फीलिंग सेफ एंड सिक्योर्ड? या उसको जैसे अभी हिमानी ने बोला उसको डर लग रहा है, तो कई बच्चे बोलते हैं मुझे स्कूल जाना ही नहीं है. क्यों नहीं जाना? टीचर डांटती है, टीचर मारती है, डर लगता है मुझे स्कूल जाने में, मुझे स्कूल में कुछ बच्चे चिढ़ाते हैं, कुछ तंग करते हैं, मुझे स्कूल ही नहीं जाना, मैं सेफ नहीं फील कर रहा. अब जब मेरा सारा ध्यान अपनी सेफ्टी पे है तो सीखने पे कैसे होगा? और अगर सीखने पे नहीं होगा तो बिहेवियर कैसे होगा? और मैं शांति से कैसे बैठूंगा? प्रॉब्लम्स. Belongingness and love needs, like Ruma ma'am also said, like Himani also said before, very very important at this age that you are the role models and you are going to be. अगर आपसे उनको प्यार नहीं मिल रहा, belongingness नहीं मिल रही, then it becomes a very big issue that they will not listen to you. The main problem is that they want love at this age, care, every little thing, every little praise, every little attention. आपने उनका 3 बार नाम भी लिया क्लास में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ आई वॉज एट अ वर्कशॉप इन सम अदर सिटी विथ सम टीचर्स एंड मैंने उनको बोला जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है, जो सबसे ज़्यादा सैडेस्ट थिंग है, वो ये है कि द चिल्ड्रन हु आर वेल बिहेव्ड एंड द चिल्ड्रन हु डू देयर वर्क द फर्स्ट नेवर एवर गेट एनी अटेंशन इन द क्लास, बिकॉज टीचर का सारा ध्यान उस बदमाश बच्चे के ऊपर होता है जो भाग रहा है. तो उसका नाम तो 6 बार ले लिया टीचर ने, जिसने अच्छे से काम किया उसका तो 1 बार भी नहीं लिया. So what happens? What is that message given to the child? So please, each and every child needs your attention and your love and your focus on them. So that is very important. जब ये सब चीज़ें होंगी तो बच्चा चाहेगा कि मैं कुछ अकम्प्लिश करके दिखाऊँ, मैं अपने टीचर को खुश करूँ, मैं अपने पेरेंट्स को खुश करूँ. और देन देयर कम्स इन प्रेस्टीज एंड अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स कि हाँ ये सब होने के बाद आएगा.
इनमें से अगर इन एनी ऑफ दीज थिंग्स इफ समथिंग इज मिसिंग, इवन इफ वन थिंग इज मिसिंग, तो आप स्टेज 4 पे नहीं पहुंचोगे। एंड आपको बच्चे को कहाँ पहुंचाना है? स्टेज 5 पे। स्टेज 5 क्या है? दैट full potential, that holistic development, that holistic learning to happen. They have to and they are involved in creative activities, और कुछ create करके आपको कुछ कमाल करके दिखा रहे हैं। उसके लिए आपका उसका focus, उतना behavior, उतना सब कुछ अगर चाहिए, तो पहले first 4 steps you have to understand, take care of, very very important. सो समय समय में पानी पीना, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। सो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रूटीन बच्चों को नहीं समझ में आएगा, आपके स्कूल में भी ये होना चाहिए, घर पे भी ये होना चाहिए। अ काइंड ऑफ अ विजुअल टाइम टेबल। विजुअल क्यों? बिकॉज ऑल द रीडिंग इज़ नॉट हैपनिंग इन किंडरगार्टन राइट नाउ। वो नहीं पढ़ सकते इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसमें कुछ भी लिखिए अपने हिसाब से। सो अपना स्केड्यूल क्या है? The children should know कि after this what is coming and after that what is coming and what I am going to do. So this is my expected routine. And उसके बाद क्या होने वाला है? So many times I've seen in schools and classes, teachers बच्चा बहुत ही totally engrossed है ब्लॉक प्ले में। वो ब्लॉक से अपने बहुत अच्छा टावर बना रहा है। अचानक टीचर बोलती है टाइम फिनिश हो गया, चलो अभी इंग्लिश पढ़ना है। अरे मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा दिमाग उसमें लगा हुआ है। सो ऑल द टाइम यू शुड बी गिविंग देम सम टाइमिंग्स। जैसे ही आपको लगता है कि अगले पीरियड का टाइम हो गया या अगले सेशन का टाइम हो गया है, देन यू विल ऑल्सो हैव टू गिव देम एन एडवांस नोटिस। 5 minutes more and you have to keep your blocks away. 5 minutes more and ये हम पेंटिंग बंद कर देंगे। 5 minutes के बाद अब हम नंबर्स करेंगे। Please let them know, let them see. Go to this kind of create this in your class, hang it in your class and उसमें जाके दिखाओ। अभी हमने क्या किया? We did circle time. अब हमारा learning centers का टाइम है, अब हमारा इंग्लिश का टाइम है, तो हम वो करेंगे। You will see a major difference and a major shift in change of behavior and transitions from one activity to the other if they know what you are telling them. So please do that. Timetables are not only for the primary and the secondary students, it's also for mainly from play school onwards. They should know what's going to happen next. Very, very important. So routine is of prime importance and it should be consistent. आप change नहीं कर सकते अपने हिसाब से बार बार। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अभी किसी दिन बच्चा स्कूल आया और आपने बोला चलो आज अभी टिफिन खाई मैं, तो बोलेगा सर्कल टाइम कहाँ गया? You know, it should not be like that. And it will happen with you also. यदि स्कूल के बाद आप घर जाओ और अचानक से कुछ और रूटीन हो रहा होगा, it will confuse you also. So, have the routine. Make sure children go to the routine. And sometimes for junior and senior KG, you can tell them also, okay, let me know what is coming next. ये हो गया पीरियड, ये काम हो गया हमारा, अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है? Let the child go and tell you कि हाँ अब ये होने वाला है. Okay, make these class captains who can tell the routine. So एक routine captain बना दीजिए अपनी क्लास में, एक होशियार बच्चे को, वो सबको बताएगा कि अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है. Behavior is sorted. Now behavior, go back to the definition, first slide. Was a response to a particular situation or stimulus. मतलब किसी चीज के ऊपर एक बच्चे का एक रिस्पॉन्स आया है. अब वो रिस्पॉन्स कैसा होगा? ऐसा भी हो सकता है टैंट्रम्स वाला, ऐसा भी हो सकता है आर्ग्यूमेंटिव वाला, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को नहीं करना, आपकी बात नहीं सुननी है, ऐसा भी हो सकता है, राइट? उसके बाद एंगर भी हो सकता है और उसके क्राइंग भी हो सकता है. लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वो लास्ट वाला जो हैप्पी चाइल्ड है. हमें चाहिए कि हर समय हम जो बोले बच्चा चुपचाप हैप्पीली सब कुछ कर ले. लेकिन what is why is this response coming? Different responses from different kind of learners. The earlier two speakers have already spoken about it. Different kind of learners, उनके responses different होंगे to a particular situation. Situation चाहे same भी हो, लेकिन सबके responses will be different. और ये different responses कब आता है, क्यों आता है, ये समझना आपके लिए as a teacher बहुत important है. So responses arises due to an emotion. कैसे होता है? अगर किसी ने अभी आके गाली दी, रूडली बोला, क्या रिस्पॉन्स होगा? आपको भी गुस्सा आ जाएगा, आप भी रूडली बोलोगे. तो ये रिस्पॉन्स है, लेकिन किससे शुरू हुआ? एक इमोशन से.
हमें कोई चीज़ बुरी लगी, इमोशन क्या है? फीलिंग्स हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ पे दुख हुआ, किसी चीज़ पे गुस्सा आया, कोई चीज़ पे एक्साइटमेंट है, किसी चीज़ पे कुछ, एनी काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स इज ड्यू टू एन इमोशन और अ फीलिंग दैट वी अंडरगो, एंड द सेम थिंग हैपन्स विद चिल्ड्रन. Now we are adults, we can control our emotions, regulate our emotions and also condition our emotions. हमें पता है किस जगह पे किसके सामने कैसा रिस्पॉन्ड करना है. But do you think a 3 and a 4-year-old child knows that? They don't know. उनको अपना इमोशंस रेगुलेट करना नहीं आता. उनका तो इमोशन है और वो सामने जाहिर है. It's expressing itself. So whatever it is, you will have to see. So what do we have to do? लाइक रूमा मैम ने बोला, एक बच्चा शांति से चुपचाप कोने में बैठा, क्या आप उसके पास गए या पूछने के लिए कि क्या हुआ आपको? नहीं. You have to understand what the child is feeling at that time. If a child is behaving in a bad manner, you have to understand why the child is behaving like that. What is he going through or she going through? What is the child feeling? Why is she or he behaving like this? What caused this reaction? किस वजह से ये रिएक्शन आया? और इसके लिए अगर आपकी क्लास में कोई बहुत ही बदमाश बच्चा है या कोई बच्चा है जो हिटिंग करता है या नहीं बात सुनता, प्लीज़ ट्राई टू सी कि उसके जस्ट पहले क्या होता है, किस चीज़ से उसको ये रिएक्शन आता है कि वो किसी को मारे. किसी ने उसका टॉय ले लिया इसलिए, सो प्रॉबेबली वो शेयर करना नहीं जानता. अगर नहीं जानता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते. देन यू विल हैव टू रिजॉल्व टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, बच्चा नहीं सोच रहा. And they can't think also. They're not of the age to think about all of this. So this is the adults things. You have to understand what is the precursor of a behavior. Then what is the behavior? And उस behavior का क्या consequences है. और ये चीज़ बच्चे को भी आपको समझानी है as a rule कि अच्छा आप ये करोगे तो ये होगा. समझना ज़रूरी है. That understanding has to be there. Only don't do this, don't do that. Sit quietly. Why are you standing? Don't talk. ये बोलने से थोड़ी ना होगा. उसको बच्चे को ना आगा पछा था कुछ पीछे पता ना कुछ ये पता कि टीचर मुझे क्यों बोल रही है. So you'll have to tell ना, right now don't talk, right now teacher is talking. After that I'll give you time to talk. मेरी बारी अभी बात करने की, फिर आपकी बारी होगी. अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो ये होगा. प्लीज लेट देम नो. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. जो हम बोल रहे हैं बिहेवियर मैनेजमेंट, बड़ा सा टर्म है, लेकिन एक्चुअली अगर आप ये सब चीज़ें मैनेज करोगे एज एन एडल्ट, एज अ पर्सन हु इज इन कंट्रोल, सब चीज़ मैनेज हो जाएगा. दैट इज बिहेवियर मैनेजमेंट. आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पॉन्डिंग इज दैट इट इज़ अ थॉटफुल प्रोसेस. किसी ने कोई बच्चा वहाँ पे भाग रहा है, आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, मतलब आप उसके पास जाओगे, उसको रोकोगे और पूछोगे बच्चा क्यों भाग रहे हो, वाई आर यू रनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ये आप उसको पूछोगे. रिएक्शन क्या होगा? बच्चा भाग रहा है, यार स्टॉप रनिंग, चुपचाप बैठ जाओ, मैं क्या बोल रही हूँ, मार खाओगे, अच्छा बाहर निकाल दूंगी क्लास की, स्टार नहीं मिलेगा. ये रिएक्शन है. आपने समझा तो है ही नहीं बच्चे को, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आप उसकी नीड्स को. whatever maybe it is his need to run. They are kinesthetic children who cannot sit at one place. अगर उनको आप एक जगह बिठाओगे तो उनका ब्रेन शट हो जाता है, बिकॉज दे थिंकिंग कब जो लूँ, कब हिलूँ, कब हिलूँ, कब खिलूँ, कब उठूँगा, कब जाऊँ. वो तो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, उसके दिमाग में तो कंटिन्यूसली लूप में ये चल रहा है. सो दैट्स वाई आप सब बच्चों को एक बराबर से नहीं बिठा सकते. जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी केयरफुली. अंडरस्टैंड इमोशंस एंड लेबल इमोशंस. इमोशंस को बोलो, वाई आर यू फीलिंग एंग्री, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों, आप रो रहे हो, क्या हो गया, आप दुखी हो. ये मत बोलो डोंट क्राई, मत रो. अरे पहले पूछो तो सही, रो क्यों रहा है, मत रो क्या, उससे प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी. एंड इसीलिए बच्चे रोना बंद नहीं करते हैं. लेबल द बिहेवियर एंड नॉट द चाइल्ड. द चाइल्ड इज नॉट नॉटी, द चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग बैडली. द चाइल्ड इज, जो बिहेवियर है उसको लेबल करिए. यू नो, हिटिंग इज बैड, डोंट से यू आर बैड. राकेश बहुत गंदा लड़का है, नहीं. राकेश बहुत बदमाश लड़का है, नहीं. राकेश ने जो किया वो ठीक नहीं किया, तो वो उसको लेबल करो एंड देन ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. अगर आप जब बच्चे को लेबल करते हो तो बच्चा अपने बारे में वो बिलीव करने लगता है. ठीक है, राइट नाउ इज द एज एंड द स्टेज वेयर वट एवर वी आर टेलिंग देम इट बिकमिंग देयर बिलीफ सिस्टम. वो उनका बिलीफ सिस्टम बन रहा है. सो आप
कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी है। अगर घर पे पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चा बहुत राजा बेटा है, क्लास में बोल रहे हैं बहुत गंदा बच्चा है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा मैं राजा बेटा हूँ कि गंदा बच्चा हूँ। You don't do that, okay? And always label the actions and the behavior of the child. Never label the child. प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब हम बात को समझौते में बातचीत करके सॉल्व करेंगे। इट इज नॉट दैट आपको मेरी ही सुननी होगी या मुझे आपकी ही सुननी होगी, दोनों रॉन्ग है। टैंट्रम्स में भी गिवन नहीं करना है, बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करना है, बट you have to make the child understand, you have to understand how to resolve it. There should be no punishments and no rewards. ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जितनी बार हम बच्चों को ब्राइब करते हैं, जितनी बार पेरेंट्स बच्चों को ब्राइब करते हैं, ये कर लो फिर मैं घूमने ले जाऊंगा, ये कर लो फिर तुमको चॉकलेट मिलेगा, ये करो तो आईपैड खरीदूंगा, नया मोबाइल दूंगा, 4 घंटे गेम खेलने देंगे, अच्छा ये करोगे तो ये कर, ये सब गलत है। सो ऑल दीज रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो बैड। दैट मीन्स द चाइल्ड इज ओनली वर्किंग टुवर्ड्स अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड नहीं मिला तो नहीं करेगा, और ऐसे ही लाइफ जीनी है या समझना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पनिश करेंगे तो रेबल जैसे बोला था, एक तो वो है, दूसरा बात क्या हो जाती है कि बच्चे डर जाते हैं, तीसरी बात ये हो जाती है कि दे थिंक दैट दे आर बैड पीपल, जिनको पनिश करना चाहिए, करा जाता है। एंड एक बार ये बात घर कर जाती है तो दे फील कि ठीक है ना, पनिशमेंट ही तो मिलेगी, वी आर यूज्ड टू इट, मिलती रहती है। ऑल ऑफ दीज आर बैड। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम एंड ट्राई टू प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उनको समझाना और खुद समझना बहुत ज़रूरी। पहले खुद समझिए फिर समझाना। खुद नहीं समझा तो मेरे से फिर से पूछ लेना कैसे समझना है ना, हिमानी से पूछ लेना। चेंज द प्रेसिडेंट, द व्हाट हैपेंड बिफोर, जिसकी वजह से वो बच्चे का ये बिहेवियर आता है, उसको चेंज करो सिचुएशन को। अगर 2 बच्चे टॉय के लिए लड़ते हैं और एक बच्चा किसी से टॉय छीन लेता है, उसके बाद वो उसको मारता है, तो ये सिचुएशन मत आने दो। पहले ही बोलो कि अभी आपका टाइम है खेलने का, आप खेल लोगे फिर उसको दोगे। अच्छा 2 टॉय रखो, अच्छा किसी को भी टॉय मत दो, खुद रख लो। ऑल दीज 3 थिंग्स आर फाइन। वो सिचुएशन चेंज करो। You have to be the role model that everybody, all the educators here have already confirmed that. Model and teach the expected behavior. How are you behaving in class? If you are shouting all the time, children will also shout all the time. अब बच्चे चिल्ला रहे क्लास में, टीचर उससे ज़्यादा जोर से चिल्ला रही है, so what is going to happen? Problem sorted? नहीं, शोर बढ़ गया। हम शोर कम करना चाह रहे थे, शोर और बढ़ गया। So try and model and teach them the expected behavior. Reinforce gently. Give options to the behavior. अच्छा आपको ये टॉय चाहिए था, ये ना उसने सुनीता ने ले लिया, अब राकेश को नहीं मिला। अभी राकेश तुम क्या करना चाहते हो? वेट करना चाहते हो कि सुनीता खेल के आपको दे, मैं आपको दूसरा टॉय दूँ, आप क्या करना चाहते हो? उससे पूछो। Give them options. Let them decide. पहले तो सोचने लगेंगे बच्चे तो अपने आप लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, अपने आप बिहेवियर कंडक्ट करना आ जाएगा। द मोमेंट यू एंगेज देम इन कॉन्वर्सेशन एंड आप उससे बात करने लगते हो, वो भूल जाते हैं कि वो गुस्सा थे। दे वेरी स्मॉल। एट दिस टाइम यू कैन डू इट, बट यू हैव टू डू इट इन अ वेरी जेंटल एंड टैक्टफुल एंड केयरिंग मैनर। जिधर पावर दिखाई ना उधर वो टैंट्रम दिखाएगा ना, पता देख लेते हैं किसमें ज़्यादा दम है। ठीक है, डोंट डू दैट। After you do these 3 things, the consequences changes. It changes the consequence जो होने वाला था, जो होता है बाद में behavior के बाद में। ठीक है, so these are the things. Another very important point, ये पता क्या है, किस चीज़ का साइन है, आइकन है? Pause. Pause. Pause किस लिए दिया मैंने? कुछ भी रिएक्ट करने से पहले पॉज करो। दूसरा, if you are going to ask a question to a child's brain is developing at the moment. उनके न्यूरॉन्स के अंदर कनेक्शंस नहीं है, the synapses are being formed. So क्या होता है, whenever you are asking a question, they need time to process it in their head. अभी जैसे मैंने भी इतनी सारी चीजें बोली, you need to process it. So उनको भी one question also they need to time to process. So when you ask a question, pause for 6 to 10 seconds. आपको पता है 6 to 10 seconds कितने होते हैं? 6 seconds कितने होते हैं? So I ask you, are you enjoying the workshop? Then I'll pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I'll expect an answer from a child.
And just see, after exactly 6 seconds, I began getting answers in my chat box also. तभी आता है, हम टाइम लेते हैं भाई प्रोसेस करने के लिए। 3 साल का छोटू सा बहुत बच्चा छोटा है बच्चा। और उसके बाद 4 साल का छोटा सा बच्चा है, और आप उसको कैसे बिहेव करते हो? मैं बताऊं आप कैसे बिहेव करते हो? 6 सेकेंड्स तो छोड़ो, 1 सेकेंड नहीं देते हो। स्नैक टाइम है, पढ़ाई का तो छोड़ ही दो, स्नैक टाइम है। सब बच्चों ने टिफिन निकाला, एक बच्चे ने नहीं निकाला। क्या हुआ बेटा, टिफिन क्यों नहीं निकाला? नहीं लाए हो, मम्मी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अच्छा सुनो, एक काम करो, दूसरे से शेयर कर लो। वो बच्चा बेचारा सोच रहे ये एड़ी है क्या, पागल है, लाया हूँ टिफिन, बोलने तो दो, बताने तो दो, लाया हूँ, यही नहीं बताने दिया। नहीं लाए हो, अच्छा मम्मी ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, चलो बाजू वाले से शेयर कर लो। तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, आज पेंसिल नहीं लेके आए हो बेटा, बैग लगाया करो रात में ठीक से। अच्छा चलो अपने फ्रेंड से ले लो। मौका कहाँ दिया बोलने का कि मैं लाया हूँ? You have to be relaxed, calm. So 6 seconds. And nursery and play school children 10 seconds. They need time to process what you're saying. 4 things, 5 things एक टाइम पे सब lost हो जाता है. Simple things and simple solutions. You want ये मत देखो, हाँ, ये मुझे भी नहीं देखना था, कहाँ से आया पता नहीं. Anyways, skip आ रहा है क्या? हाँ आ गया. बच्चे सारे के सारे अभी स्कूल आए हैं और सब इधर उधर घूम रहे हैं, और हमें सर्कल टाइम के लिए बैठना है, सर्कल बनाना है. अब टीचर चिल्ला रही है मेक अ सर्कल, मेक अ सर्कल. क्या हुआ, सुन क्यों नहीं रहे हो? मेक अ सर्कल. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? व्हाट यू डू इज जस्ट सिंग अ सिंपल सॉन्ग, छोटा सा. Time to make a circle. Make a circle, big, 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 small, 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 big, big, big. Make a circle, small, small, small. Hello, hello, hello. Make a circle, round and round. ओके, हो गया. इसी तरीके से अपने क्लास में सारे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो आप. जब when they have finished their tiffin, time to keep your tiffins away, tiffins away, tiffins away. टॉयज रखने का टाइम है, पेंट्स रखने का टाइम है. यू हैव टू मेक देम सिट डाउन. कम एंड सिट हियर विद द टीचर, विद द टीचर, विद द टीचर. कुछ भी, एनीथिंग, व्हाटएवर योर इंस्ट्रक्शंस आर. आप चिल्लाने की जगह एक लाइन में गाना शुरू करो, एंड जैसे राइम्स में आपके पास अटेंशन आता है बच्चों का, वैसे ही अटेंशन आ जाएगा. यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी सिंगिंग. You have to connect their right and the left brain together for any instructions to be taking place inside their brain so that they follow it. 1 मिनट लगेगा. ये अभी सर्कल बनाने के लिए अभी आप जैसे ऐसे गाना गाओगे, सपोज यू स्टैंड एंड अपने दोनों हैंड्स आप दे दो और बोलो, come on, let's make a circle, big and big, 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 small, 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 round and round. सब आ जाएंगे आपके पास. Everybody will come, they'll hold your hands, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, सर्कल बन जाएगा. Now say sit down. एंड बात खत्म हो गई. यू डोंट हैव टू शाउट. फिर आप बोलोगे कि लोग बैडली बिहेव कर रहे हैं, कोई बैडली बिहेव करेगा ही नहीं. एंड सबसे पहले खुद भी बैडली बिहेव करना बंद करना. नीचे क्यों नहीं जा रहा? ओके, go to the next one. Classroom rules. You can make classroom management rules for yourself, where you can put up these kind of posters. And every single day when the children come inside your class, tell them these rules. लेकिन ये rules बनाने से पहले उनके साथ एक agreement करो. Ask them also. क्या हमारी क्लास में looking eyes होने चाहिए? Should you look at the teacher? Should teacher look at you? Yes. क्या हमारी क्लास में listening ears होने चाहिए? क्या हम एक दूसरे की बात सुननी चाहिए? आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगी. हाँ ठीक है. क्या क्वाइट वॉइस में बोलना है कि लाउड वॉइस में बोलना है? When you will ask them these questions, वो लोग आपको आंसर करेंगे, और जब वो आंसर करेंगे तो आप उनको पूछोगे, डू यू ऑल एग्री? क्या आप ये मानते हो कि हमें ऐसे रूल्स रखने चाहिए? ठीक है, फिर रखने हैं तो हम क्लास में टीचर लगाएगी और हम सब ये फॉलो करेंगे. टीचर भी फॉलो करेगी, आप भी फॉलो करोगे. इट्स एन एग्रीमेंट. कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा. वहीं पे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. ओके, another example, this is the last slide. This is where you have to tell them, ये एक discipline chart होता है.
आप अपने स्कूल में लगा सकते हो, क्लास में लगा सकते हो। अपने क्लास में अगर आपने ये चार्ट लगाया, इसका मतलब है ऑल दीज एप्पल्स विल हैव चिल्ड्रंस नेम्स ऑन देम या पिक्चर्स, जितने जो एज ग्रुप के आपके बच्चे हैं, ठीक है। आपने उसमें यू हैव पुट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन और द पिक्चर्स ऑफ द चिल्ड्रन, एंड ये एक एप्पल है, ट्री है, यहाँ पे अलग रखा हुआ है, बट यू कीप इट इन अ बास्केट ऑल द एप्पल्स। नाउ ऑल द चिल्ड्रन हु आर बिहेविंग वेल, who can play with friends, who can share, जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब एक साथ एप्पल पे रहेंगे, ट्री पे रहेंगे। ऑल द एप्पल्स विल गो ऑन द ट्री, मतलब उन बच्चों के एप्पल्स जिनके नाम लिखे थे इंडिविजुअली, वो सब आप ट्री पे लगा दोगे। जैसे ही किसी बच्चे ने बैड बिहेवियर किया या बात नहीं सुनी या अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक से मिलके नहीं खेले, नहीं पढ़ा या जो व्हाटएवर, तो उसका एप्पल लाके आप वापस बास्केट में डालोगे, लेकिन वो पनिशमेंट की तरह नहीं। अब बोलोगे अभी आपका एप्पल बास्केट में जा रहा है बिकॉज अनुज ने ठीक बिहेवियर नहीं किया। जब अनुज ठीक बिहेवियर करेगा तो टीचर एप्पल निकाल के वापस ट्री पे लगाएगी। समझ आया? क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस राइट नाउ? या ये डिसिप्लिन चार्ट समझ में आ गया? यस, नो? All good, I all good, want all to- yeses. I want to say Ruma, something. Ruma ma'am wants to Ruma ask. ma'am also wants to say something. हाँ Ruma ma'am. I want to say this, that if all that you have said, even if one half of it is implemented in the classroom, we will have engaged classrooms. Children are Yes. going to be completely engaged, and their domains, what Nina talked about, will be taken care of. The life skills are automatically incorporated in the classroom. Absolutely. So this is what Smriti has said. I think it should be taken as making your classroom the most engaging place to be in. Thank you. Thank you so much, Ruma ma'am. Thank you. That's very Thank true. you, That's Neena. very true, Ruma ma'am. That if Smriti ma'am's instructions are followed, or the suggestions, I'll not say instructions, suggestions are followed, I think everything's sorted. And I'm very happy, Smriti ma'am, that we came to you in the end. You've kind of given a summary to the whole session, what Neena ma'am said and what Ruma ma'am said. Yeah, It's because I all was listening very summarized. carefully to them, so I thought, let me take it forward from there. And my whole idea was to give some solutions to the teachers. कि आज सबने फाउंडेशंस इतने टाइम के बाद ज्वाइन किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टेक अवे नहीं हो। नीना मैम ने इतनी अच्छी बातें सिखाई, आपको समझाई डोमेन्स के बारे में। रूमा मैम ने आपको स्किल्स के बारे में बताया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको ये करना था कि हाँ ये सब हम करना तो चाहते हैं, करें कैसे, तो मैंने आपको वो करा दिया। तो हम तीनों जो है ना एकदम अलाइंड है एक दूसरे से, और ये सब हिमानी का काम है। सो यू पीपल हैव प्लीज हैव वेरी वेरी गुड वीकेंड। मेरे तरफ से थैंक यू, बाय बाय। एंड ऑल्सो प्लीज एनी क्वेश्चंस, हिमानी इज देयर फॉर यू पीपल, गो अहेड। अभी नहीं समझा कुछ भी तो anything, any questions you have from all of us, please go ahead. Thank you, One of the Himani. best feedbacks I've got is that it says, a couple of teachers have said, we'll definitely follow this. It's very interesting. And then one of the best sessions we have attended. So that gives me a lot of pleasure. And thank you so much, mentors. It would not have been possible without you. I mean, I'm always very happy to have all three of them on board all together and have a power pack sessions for all my teachers. And I must acknowledge that on a Saturday evening, everybody joining in, and a number has gone up to 250 today. It is a huge number. Thank you so much. Your faith in all of us makes us and keeps us going always. And I'm again happy we've resumed the foundation sessions, and we'll see you. This time we'll see you every Friday. So we'll do foundational Fridays, because as mentor suggested कि Saturdays को ना teachers को भी छुट्टी मिलना चाहिए। Saturday शाम को घर जाके घर वाले भी wait करते हैं, कि घर वाले कहते हैं कि अभी आई है तो अब Saturday evening भी होना चाहिए and Sunday भी होना चाहिए. So we'll do foundational Fridays. We'll keep it in the evening, 5 to 6, and we'll see you on Fridays, foundational Fridays. And I've shared the link of the feedback in this chat box. I'm sharing it again, and I'll share it in the group itself. Please fill in the feedback form. You'll receive your certificates immediately. For any questions, any doubts, any queries, you can put it in the group, and I will connect with you on Monday now. Sunday, Himani, you shared the NCERT link also? That I'll share in the group, ma'am. There's a link. Okay. Share it an with excellent. us. Share it with us also. So I don't know if everybody can see. It's Jaadui Pitara. There is a number. You can Jaadui WhatsApp- Pitara. you can send a Jaadui WhatsApp to Pitara. that number. The moment you send a hi to this number, it will give you a chat bot. And then you can ask this chat bot, I'll tell you what all.
You can say story Sakhi, parent Tara, teacher Tara. It's amazing, yeah. It's lovely. I mean, I love what NCERT is done here. And then there are 2 links of eJaadui Pitara and the Diksha app. It's wonderful. I will share the recording Monday, Shivali ma'am, for sure, for sure. I will share the recording and it will come with all the slides that were shown here. So the complete recording, the video recording. How to join the group? Just drop me a message on this number. I am sharing it here and I will add you to the group. I think it's the wrong number. 8146867885. Yeah, I've shared it. Don't share your numbers. I won't be able to use it from this chat box. Just share my number. Send me the WhatsApp. I will add you. 8146867885. Send me your WhatsApp. I'll add you to the group. Thank you so much once again, mentors. It was a lovely, lovely, lovely session. Right from domains of learning to life skills and to discipline versus behavior management. I think we've covered all the tidbits here. And see you soon on the next session of Foundations. Thank you so much. Thank you, educators. I'll stay here for a bit. If anybody has any queries, please do not send me your numbers. I won't be able to take them from here. Thank you so much. I'll stay on for a bit if anybody has any queries. I'm sharing the feedback link once again on the chat box. आप अपना नंबर मत शेयर कीजिए टीचर्स, मेरा नंबर लीजिए और उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. आई विल एड यू इन द ग्रुप. मैंने अपना नंबर भेज दिया है चैट बॉक्स में, देखिए 8146867885. उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी. बट आप अगर अपना नंबर यहाँ देंगे तो मैं इतने नंबर्स कहाँ से पिकअप करूंगी, मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगी. आप प्लीज मेरा नंबर ले लीजिए 8146867885. Thank you so much, teachers. I'll share everything in the group also. Now I'm signing off from here. Thank you so much. Have a great weekend. Yes, Sona ma'am. I'll just allow you to unmute. Yes, you can unmute yourself, Sona ma'am. Hello, good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, I want to ask one thing from the panels. That first of all, panelists are there? No, ma'am, they've just left. Okay. I'll take your question. आप Okay, मुझे ma'am. बता दीजिए. I'll take it and I'll send it back. If you want to send me a WhatsApp, send me a WhatsApp. I'll share it with the panelists and I'll share it back with you. Okay, I will share on a personal chat. No problem. Just send me on WhatsApp. Okay. Okay. Thank you so much. Bye.